Let us chant Gayatri Mantra to begin the practice for today. Inhale. Om Bhurvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Namaha Prachodayat. Om. Slowly and gently open your eyes to start the practice for today. Let us start with the warm-up. Right leg comes out. Let us start with ankle rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. The other way around. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Your toe comes up and down. Toe comes up and down. Last count, toe comes up and down. And just move your fingers also up and down. Right leg comes back. Left leg goes out. Let us start with ankle rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. The other way around. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Toe up and down, toe up and down. Last count, toe up and down, and then move the fingers also up and down. Right leg and left leg comes back. Let us start with knee rotation. 5 counts. 1, 2, very good. 3, 4, and 5. The other way around. 1, 2, 3, 4, and 5. Let's come up. Let's come to our waist. Have some shoulder width distance apart between your legs, and let us start with hip rotation. 1, 2, very good. 3, 4, and 5. The other way around. 1, 2, 3, 4, and 5. Let's come up. Let us start with hand rotation. Like I told, hand rotation is very, very important for all of us to lift our chest up because it starts sagging down. So we have to do arm rotation a lot, okay? And especially from down to bottom. So if you see, if you are going from down to up, see, it is lifting up, right? So that is why we do more counts, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. The other way around. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Right hand comes down. Let us start with left hand from down to up, bottom to up. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. The other way around. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Let us start with both hands together now. Okay? From bottom to up. 1. Very good. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. From here, the other way around. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Come down. Let's bring our hands down and let us start with neck rotation from the right hand side to the left hand side. You want to close your eyes and just relax. Inhale from the right hand side, slowly and slowly go back. Exhale and come down. 2. Inhale. Exhale and come down. 3. Inhale. Exhale and come down. 4. Inhale. Inhale. Slowly and slowly exhale and come down. 5. Inhale from the right hand side again. Exhale and come down. Sahana, I hope you are doing and you are with us. Okay? From the left hand side, let us start once again. Inhale. Exhale and come down. 2. Inhale once again from the left hand side. Exhale and come down. 3. From the left hand side again. Inhale, exhale after 2. And let's come down. 4. Inhale from the left hand side. Exhale and come down. Back down. 5. Inhale from the left hand side again. Exhale and let's come down. From here, let us quickly look on the right hand side. Inhale and look on the right hand side. Only your neck will twist. So today we will be doing only twists and locks. Okay. So come to the right hand side. Let's come back. Inhale to the left hand side. Turn to the left hand side. Only your neck rotates. The entire body is still straight. Let's come back. 2. Inhale once again. Look towards the right hand side. Very good. Let's come back. Inhale. Let's look towards the left hand side now. Come back. Last count. Inhale. Right hand side. And let's come back. Inhale. Last count towards the left hand side. Let's come back. Inhale and go up. Very good. Back. Inhale, let's go down. Come back. Inhale, go up. Back. Inhale, go down. Back. And last count. Inhale, go up again. Back. Inhale, go down again. And let's come back. Last stretch or warm-up exercise for today. Inhale and bend on the right hand side. Let's come back. Inhale and bend on the left hand side. Come back. 2. Inhale, bend on the right hand side. Very good. Back. Inhale, bend on the left hand side. Back. Down. Inhale, bend on the right hand side. And back. Inhale, bend on the left hand side. And back. From here,
From here, inhale from sideways, and let us interlock your palms and bend towards the right hand side. So we are starting with the twist for today. Inhale and then keep slowly and exhaling and bend towards the right hand side. Very good. Keep going down. Let us do for 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And slowly, let's come back. Inhale once again from here and let's twist or bend on the left hand side now. Very good. 1, and keep going down slowly as much as you can. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Let's come back. Hands by your side. Let's come down. From here, bring your hands up towards your chest. Inhale and let's again twist to the back from the right hand side. And keep going back as much as you can. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Let's come back. Inhale. Let's now twist towards the left hand side and go back. Very good, everyone. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, and 10. Let's come back. We will do one more set once again. Okay, so from the sideways again. Inhale, hands go up, and then once again from here. Very good, Rishita. Good morning. From the right hand side, bend. 1, 2, keep going down so that you feel the stretch on the left hand side. Okay, very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Let's come back. Inhale and let's bend and twist on the left hand side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Very good, Devashri. 10. And let's come back. Let's bring our hands towards your chest and let's again twist. Inhale and twist on the right hand side and turn back. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Let's come back. Inhale towards the left hand side now. Let's go back and keep twisting as much as you can. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Let's come back. Now, from here, lift your right leg up on your left thigh. Okay? Just look at me very slowly. Try to balance yourself. And now, your right hand from the back goes and touches your left leg, the thumb. Okay? So you can keep lifting it up. And now you can start using your towel. Okay? So what you can do is, you can tuck the towel in between the fingers of the thumb and the fingers. And like this you can tuck. And then from the back you can keep bringing the towel and keep holding it near and near. Okay? So what you can do is, again, let's start once again. Lift your right leg up on the thigh as much as you can. They should try to hold something, okay? And then I know you will be able to do it for sure. Yes, very good. उसको उधर से पीछे से लेके जाओ देवश्री, पीछे से राइट हैंड साइड को पीछे से लेके जाओ. आप लेफ्ट को हाँ यस यस देवश्री. एंड देन इसको हम लोग ऐसे पकड़ेंगे. ओके, वेरी गुड. एंड देन लेट्स होल्ड. And then from here, those who can do it, it's okay. Okay, and then slowly, it's okay. You hold it from the left hand side also, the left leg.
and then try to balance, and then slowly and slowly bend down, and then try to go down and bring your knees towards your nose. Take the balance of the left leg. Okay? I will repeat again. Okay? So, your right leg is here. Very good. Everyone till here? Okay? Right leg is here. Gayatri ji, any problem? हाँ, very good, Bhabita. Yes, very good. उसके बाद राइट को पीछे से पकड़ो. हाँ, come on देवश्री. और उसके बाद धीरे 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 we will come in the front, bend, and then left hand का support लेके you can come down and then push your head towards the knees. Okay? It's okay. Slowly and slowly, once we do these practices, we will be able to manage it. It's okay. It's okay. ठीक है? चलो. Let's come back. Now let us put left leg on the right side. Okay? चलो. Very good. Right leg. Left. Let us put it on the left side. And now, from the right leg, right hand comes from the back, and then you can hold the thumb. हाँ. गायत्री जी टॉवल का यूज कर लो ना. एंड देन पीछे से लाके देवश्री पीछे से लेकर आओ राइट हैंड को. हाँ, यस यस, ठीक है. अब धीरे 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 नीचे जाके राइट हैंड को वी विल टेक सपोर्ट एंड देन ट्राई टू पुश योर हेड टुवर्ड्स योर नी. हाउ मच यू कैन डू, इट्स ओके. Even if you can't do, it's okay. You can, जितना हो रहा है आराम, no worry. Okay? So this was Ardha Badra Padma Asana. Okay? चल, okay. So from here, let us move to the next. Let's move left leg in the front. Left leg को आगे लेके जाएंगे. Right leg is like this, making a 90 degree. Okay? We will go to Trikona Asana. So from here, slowly and slowly, slowly and slowly, keep bending. And those who can hold, you can hold the left ankle. Those who can place, like Devashri, you will be able to place the left hand on the floor. Okay? So left hand को floor पे रखकर, and what we will do? Lift your right hand up. Those who can hold the ankle, very good Radha, very good. थोड़ा सा और आगे ले आओ पैर को, left leg को और आगे ले आओ. हाँ. So we are doing Trikona Asana. Okay, everyone, left hand on the floor or holding the ankle, and right hand goes up straight, Trikona Asana. Let's hold for 10 counts over here. Try to bring the body straight. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. From here only, what we will do now, that we will twist. Okay, so the twist is there. Now we will do Parivarta Trikonasana. Your right hand actually will go down beside your left leg. Okay, so just look at me once. We are twisting now. So right hand goes down, left hand, both the knees are straight, and now let's go up. Left hand becomes straight. Okay? Yes, very good Radha, very good. Hold the ankles. Very good Gayatri ji. Come on Devashri. Devashri, ankles को, knees को bend मत करना. Very good. Yes, come on Babita. Very good everyone. Let's hold for 10 counts over here. So we are twisting the body as much as we can. Come on, let's hold. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And let's come up. Now we will do on the other side. Okay, so from here only, just rotate. Your right leg is now straight. Your left leg is making a 90 degree. And then with your right hand, either you can hold your ankles or you can place the right palm on the floor. You can keep some distance. आगे ले जाओ पैर. Okay. And now right hand comes down, left hand goes up. Come on. Very good. Very good. Very good, Babita. Come on, Devashri. Very good. Devashri, left hand को straight करो.
हाँ यस, और उसको आगे लेकर आओ, थोड़ा स्ट्रेट लेकर आओ, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, कम ऑन गायत्री जी, वेरी गुड, यस एवरीवन वेरी गुड, 3 4 5 6 7 8 9 and 10, and again let's hold here only. The only difference will be just twist a bit, the left leg comes on the toes now and left hand goes down, okay, knees should not bend, and your right hand comes up. You can either place the left hand on the left hand side only and then twist and bring your right hand up, twisting, 1 2 3 4 5 6 around, yes very good Gayatri ji, yes, हाँ बता कर कंटिन्यू करो, 7, come on Devashri, continue Devashri, 8 9 and 10, from here let's come up, let's come back, and let's come at the end of the mat. So we have done 2 types of variations. Hello Nisha ji, welcome. From here, it's okay. Okay, from here let us move to the third series of Parshva Asana. Okay, from here your right leg comes out and left knee is down. Right leg goes out, left knee is down. Okay, left hand down कर लिया, so right leg is out, left knee is down, left hand is the palm is on the floor, and now lift your left knee up, lift left knee up and right hand goes up straight. Yes, very good everyone, very good. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. From here bring the left knee again down and wait here only. Just look at me. From here left knee goes down. What you will do is now the twist is, we will do twist, और जो ये left hand था ना, इसको twist करके लेफ्ट हैंड को ट्विस्ट करो. बबीता सबसे पहले तो राइट लेग को बाहर लेकर आओ, हाँ यस, ओके, नाउ जो लेफ्ट हैंड था उसको ट्विस्ट किया इधर, यस वेरी गुड, एंड ट्राई टू टच विद द फिंगर्स ऑन द फ्लोर. गायत्री जी यू कैन डू इट, आई नो, हाँ यस, चलो देवश्री आपका तो हो ही जाएगा. निशा जी लेट अस स्टार्ट. सो राइट लेग इज आउट, यस देवश्री राइट लेग आगे करो, लेफ्ट है आपका, राइट आगे करो, हाँ राइट के बाद लेफ्ट हैंड को ट्विस्ट करो, उधर लेफ्ट हैंड को ट्विस्ट करो देवश्री, लेफ्ट हैंड, हाँ लेफ्ट हैंड नीचे किया और अब लेफ्ट नी को उठा लो एंड राइट हैंड अप. ओके वेरी गुड ओके वेरी गुड राधा, वेरी गुड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, so again left knee comes down, be there only, and now what we will do is इसमें take the towel, take the help of the towel. जो लेफ्ट हैंड था ना उसको और हम लोग एल्बो को पूरा नीचे लेकर आएंगे. ओके, एंड देन इसको यहाँ से रोटेट करेंगे एंड देन वी विल रोटेट इट फ्रॉम द डाउन. टॉवल ले लो एवरीवन, गायत्री जी बबीता टॉवल ले लो, हाँ यस वेरी गुड देवश्री, ठीक है, और यहाँ से इसको हम लोग नीचे ले जाएंगे एंड देन वी हैव डन दिस अगेन अर्लियर आल्सो, एंड देन राइट हैंड को ट्विस्ट करो, यस वेरी गुड देवश्री, एंड होल्ड इट फ्रॉम द बैक. ओके, लेट मी जस्ट शो इट टू यू. So what we will do is, okay, that is what, today is the day of the twists and locks. Okay, so right leg is 90 degree, left knee is down, हमने ट्विस्ट किया ऐसे. चलो एवरीवन, यस ट्विस्ट, इसको जितना हो सके इस हाथ को ना एल्बो को ब्रिंग ऑन द, यस वेरी गुड, एंड देन इसको यहाँ से, हाँ इट्स ओके, जितना होगा इट्स ओके, इट्स ओके,
हम लोग थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे तभी होगा। एंड देन फिर इसको राइट हैंड को ट्विस्ट करा और इधर से पकड़ लिया। देवश्री आई नो यू कैन ट्विस्ट। हाँ, टॉवल में कैसे करना है कि टॉवल में कैसे करना है, यू आर हियर और उसके बाद जो राइट हैंड है ना इससे छोड़ना है टॉवल को ट्विस्ट करके, राइट हैंड से छोड़ना है, ठीक है। और इधर लाके इसको पैरों में दबा के और फिर ऐसे अभी ट्विस्ट कर लिया। वेरी गुड बबीता, हाँ उसको पकड़ लिया और उसके बाद लेफ्ट नी को ऊपर कर लिया और धीरे धीरे हाथों को पीछे लेके जाना है टॉवल में, ठीक है। लेफ्ट नी को उठा लीजिए गायत्री जी। यस देवश्री सी, वेरी गुड, आई वांटेड यू टू कम टुडे बिकॉज यू आर एबल टू डू इट। इसको नहीं, ये इधर आएगा, ठीक है, इधर से किया, इसको इधर से किया, उधर पकड़ लिया, उधर, हाँ हाँ, नहीं नहीं ये इधर आया, हाँ अभी इसको पकड़ा और इधर से, ठीक है, इसको आराम से दिखना हो, ठीक है। चलो एवरीवन, सो वी विल जस्ट होल्ड फॉर 5 काउंट्स, ओके, नॉट मच, वी विल जस्ट होल्ड फॉर 5 काउंट्स, जितना हो सके उतना ट्विस्ट करो बॉडी को, ठीक है। Why I am doing all this twisting is it is very very good for everyone. Again like I told, pancreas, सब ये सब अपना twist होगा ना बॉडी में, इंसुलिन रिलीज होगा बॉडी में, एंड देन योर डायबिटीज, weight loss, all these things, belly fat, it will help in reducing. Okay, so that is why today we are doing all these twists. See, I am just trying to show you, look at the difference between Devashri and us. Sahana, we are not able to see, but I am sure Sahana will be able to do. She is having signal problem. So just look at Devashri and Sahana and look at us, right? How difficult it is for us. So हमने अपनी body को क्या बना लिया है? I am not saying that it is at fault because all of you have, most of you have babies and we have some problems in our body, right? But that is what it is, that see the way we eat, our lifestyle, we have literally spoiled our body. Right? So let's try. I am not saying that it will happen in one day. Okay, it will not, definitely not happen in one day. But if we practice like this, because I can see Gayatri ji has become very, very regular. Okay, she is attending the weekday classes, weekend classes. So once we do regular things, her level is much, much better than all of us in comparison. Because she is doing it daily or she is practicing 5 days in a week, right? So let us start. Okay, so we will just do once we will try it again, so that we build confidence. मेरे को ये नहीं चाहिए कि your confidence goes down. Okay, I want your confidence to go up. Okay, and please don't worry, I was exactly like you all. I will again send my old pictures. I was exactly like all of you. Okay, so don't worry at all. Don't think that you can't do it. You can achieve it. It is just a matter of time, practice and consistency. That's it. I was exactly like you. When I used to go and do my yoga training, I used to think, yaar mere se kaise hoga? I can't do all these things. I used to see other girls, other boys doing it, and I was like, it will never happen with me. I will not be able to do it. But once you keep practicing, you will be able to do it. Okay? So let us start again. Right leg is out, left knee is down. Let us twist. Okay? Chalo, हाथ लो. Very good, Babita. Come on, Gayatri. Let's do it. Yes, very good, Babita. I can see you trying hard. ठीक है? ये राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड को ट्विस्ट करके इसको नीचे से लेके जाना है, और इसको ये जो राइट हैंड है ना, इससे हाथ लो, यहाँ से पुश करो, ठीक है, पुश करके और इसको इधर लेके आना है. लीजा दीदी, लेफ्ट हैंड को ट्विस्ट कीजिए, लेफ्ट हैंड को ट्विस्ट, हाँ लेफ्ट, उधर से ऊपर से, यहाँ से ऊपर से लेकर आइए, हाँ यस, एंड नाउ फ्रॉम द राइट हैंड साइड यू आर ट्विस्टिंग, यस, and go and take it back. Very good, Devashri. नीचे से लॉक कर लो, लॉक करके लेफ्ट नी कम्स अप एंड लेट्स होल्ड. 1 2, very good, very good, Radha, very good. 3 4 and 5. Let's come down. Are you sweating or not? Right? Body will start sweating. See, that is what it is. Okay? Chalo. Now we will do with the left leg. So left leg comes out. Right knee is down. Okay? Right palm is down.
नहीं देवश्री, पहले इजी वाला करेंगे देवश्री, लॉक नहीं करेंगे अभी, पहले लेफ्ट लेग रो, राइट को नीचे करो, हाँ देवश्री, वेरी गुड, एंड देन नीज आर अप एंड देन लेफ्ट हैंड गोज अप, दिस इज इजी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एंड लीजा दीदी राइट नी को लिफ्ट कीजिए ऊपर, लेट्स होल्ड फॉर 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Again bring your right knee down. Okay, we will start trying to now twist. Okay, so bring your right hand up and then इसको ऐसे twist किया. Okay, पहले twist करके वापस वही नीचे fingers को try करेंगे that it touches the floor. So I will just show you. My left leg is here making a 90 degree. Right knee is down. Okay, and then right hand twist and come here. फ्लोर पर आ गए, वेरी गुड भविता, हाँ गायत्री जी थोड़ा सा और करोगे तो आपका हो जाएगा, आई नो यू कैन डू इट, ठीक है, लीजा दीदी लेट्स ट्राई, निशा जी लेट्स ट्राई, डोंट गिव इट अप, प्लीज डोंट गिव इट अप, आई एम श्योर यू ऑल विल बी एबल टू डू इट, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कंसिस्टेंसी, हाँ लेफ्ट लेग बाहर है, हाँ राइट को इधर ट्विस्ट कर लिया, तो ये जो एल्बो है ये इधर आनी चाहिए, गायत्री थोड़ा सा ट्राई करो, हो जाएगा, और उसके बाद ये राइट हैंड नीचे आ गया एंड देन लिफ्ट योर राइट नी एंड लेफ्ट हैंड को ऊपर कर लिया, चलो देवश्री, वेरी गुड निशा दीदी, यू आर ट्राइंग, वेरी गुड, गायत्री जी लेफ्ट राइट नी को उठा लो, हाँ उठा लो, हाँ उठाओ, 1 2 3, वेरी गुड राधा, 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, from here again let's take rest for 2-3 seconds. Okay, before we come in this Parshvakonasana series, we were doing this परिवर्त पार्श्वकोणासन, परिवर्त मीन्स परिवर्त मतलब थोड़ा सा चेंज कर दिया उसको हमने, ट्विस्ट कर लिया, ठीक है, और अभी हम लोग क्या करेंगे इसी में ही परिवर्त पार्श्वकोणासन में वी विल कंटिन्यू, लेट्स ट्राई डूइंग द लॉक विद द हेल्प ऑफ द टॉवल और दुपट्टा, ओके, सो व्हाट यू विल डू इज अगेन ट्विस्ट करो, बॉडी को ट्विस्ट करो, हाँ वेरी गुड, यस बबीता यू आर गेटिंग इट राइट, ये राइट हैंड को किया और फिर जो ये लेफ्ट हैंड से इस राइट हैंड को यहां से नीचे लेकर आए, यस गुड वेरी गुड, ठीक है, देखो अभी मैं इधर से दिखा, ठीक है, सो वी आर हियर, इसको जितना नीचे नीचे गए लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पुश किया और देखो पुश कर करके इसको धीरे 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 इधर आ गया, कैन यू सी माय राइट हैंड नाउ, एंड फिर लेफ्ट को यहां से लाके ये ट्विस्ट कर, और इट्स ओके निशा जी, अब मैंने मुझे 1 साल लगा करने में, टॉवल से करो और फिर ये आ गया, होल्ड 5 4 3 2 and 1 and let's come down, होगा, देखो बच्चों का हो जाता है, वही बोल रही हूँ, हमने खाना पीना ये वो सब गड़बड़ कर दिया, ठीक है, बट नो गायत्री, once we start in the clubhouse, no, I will help you twist it. Once we go back, I will help. Babita, in your case, Nisha in your case, I will tell you, maybe take some partner's help. Okay, because I know Gaurav, Babita, in your case, Nisha ji, partner की help लेके थोड़ा सा आप उनको किसी को बोल दो अगर थोड़ा सा help कर देंगे pull करने के लिए, okay? Gayatri ji, ask Madan, or you come in the clubhouse. Once we start the clubhouse, I will help you a little bit, pull your hand. Okay, or else you can keep trying. See, that is why I am just trying to show you that whatever we do, if you are able to do, उसके ऊपर फिर एक level है, फिर उसके ऊपर एक level है, right? So slowly and slowly we have to raise the standard a bit higher. Okay, चलो. So from here we are done. Okay, now the last twist in this posture. Then after this we will start sit. We will sit and do all the twists. So again, my left leg is out. Okay, right knee is down.
लास्ट ब्लॉक कर लेते हैं in the standing posture. Left leg is out, ठीक है, and then from your left hand, ये बहुत easy सबका हो जाएगा. लेफ्ट हैंड को नीचे से ले जाओ, हाँ, और इसको पीछे से पकड़, और अब राइट को यहाँ से पीछे से पकड़. हाँ, यस यस गायत्री जी, हो गया गायत्री जी. बबीता नीचे से लेके जाओ, हाँ हाँ, हो गया बबीता. चलो लीजा दीदी ट्राई करो, राइट को नीचे से लेके जाओ. देवश्री आपका तो हो ही जाएगा. नीचे जी ट्राई करो, टॉवल से राइट लेफ्ट को नीचे से लेके जाओ, लेफ्ट हैंड को, हाँ, और राइट से पकड़ो. यस, वेरी गुड सर. ठीक है, नहीं लीजा दीदी लेफ्ट को नीचे से लेके जाइए, लेफ्ट हैंड को नीचे से लेके जाइए, हाँ यस, और राइट को ऊपर. यस 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 निशा जी, यस निशा जी, यस. चलो एवरीवन, चलो वी विल डू टुगेदर. ओके, तो इसको नीचे से ले गए और ऊपर लेकर गए पीछे से. वेरी गुड गायत्री जी. और अब राइट को ऊपर कर लो, राइट नी को ऊपर. लेट्स होल्ड हियर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Slowly and slowly place the left leg, right knee comes down. आराम से बैठ जाओ वज्रासन में. बस एक लास्ट ब्लॉक और करेंगे, राइट लेग को बाहर निकाल के. ठीक है, यही वाला सेम. तो राइट लेग को बाहर निकालेंगे. लेट्स ब्रिंग द राइट लेग आउट. वेरी गुड एवरीवन. लेफ्ट नी इज डाउन. ओके, राइट हैंड गोज फ्रॉम दी अंडर योर, हाँ यस, इसको पीछे लेकर आ जाओ. और अब यहां से ऊपर से लेफ्ट हैंड को पकड़ लो. एवरीवन, यस लीजा दीदी, यस, वेरी गुड लीजा दीदी. कम ऑन बबीता, गायत्री जी, लिशा जी, चलो आगे ना. यहाँ से राइट से ऊपर आए, फोल्ड नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, टॉवल की हेल्प लेके करेंगे. और यहाँ से ऊपर से पकड़ लिया, लेफ्ट नी को अप किया, एंड देन लेट्स लुक अप. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Hands को नीचे लेकर आ गए. Left knee down, right knee also down. Now let us sit comfortably. Those who want to sit in Sukhasana, Vajrasana, Ardha Padma Asana, just look at me. Ardha Padma Asana, सीधे बैठकर right leg को you can take it on the left thigh. Okay, this is Ardha Padma Asana, one way. Or you can take the left leg on the right. Let's sit. So this week we are practicing Anulom Vilom Pranayam. Let us start with Anulom Vilom Pranayam for 10 cycles to give us oxygen in our body. Like you know, when we inhale, try to inhale as much as you can. Increase your lung capacity, and when you are exhaling, try to exhale as much as you can so that your stomach goes inside. With this, let us close our eyes and let us start with Anulom Vilom Pranayam. I hope everyone knows here Anulom Vilom Pranayam. Right thumb goes on the right nostril. Inhale from the left hand side. Exhale from the right nostril. Inhale from the right hand side. Exhale, left nostril. One cycle over. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Everyone, right nostril, inhale. Very good. Exhale from the right nostril now. Sorry, inhale from the... Inhale from right. And exhale from left. Devashri, you are looking very, very cute. The location that where you are sitting, very cute. Very good. Yeah, I know you are sitting in the balcony. Very good. Nice. Very good. Let's continue. You are getting a lot of fresh oxygen and sunlight. Very good. So, everyone, let's continue.
2 more cycles to go. And slowly come back to normal. Okay. From here, slowly and slowly open your eyes and let us sit straight. You are able to see me, right, everyone? Okay. So from here, let us start now the lock in the sitting posture. So let us sit straight, okay, in Dandasana first of all. And now what you can do is fold your right leg. Jitna isko you can bring closer to your pelvic region. Bring the right leg closer to that. Very good. Left hand you can place down to take support, okay. So left hand you can take place here. Right को ऊपर करेंगे. And then from here twist. Yes. Okay, and then take it back and left hand from the back, go back and then pull. Okay, so I will show you. Yes, very good, Gayatri ji. Immediately you took the towel. Very good. Okay, so what we will do? I am like this, right leg, right hand goes up. यहाँ से आगे से इसको twist किया, पीछे लेकर आए, and then from the left, back, hold it. Okay, and then look at the back. Twist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. From here only exhale and keep going down in the front. I know it's difficult, but it's okay. Karo, let us try. Okay. So today we are doing flexibility, lock, twist, everything together. Okay. So keep going down. Slowly and slowly. Keep going down for 5 counts. 1, 2, 3, 4, and 5. And let's come up. Let's release the lock. Okay. अभी क्या करेंगे? From here only, just fold this left leg. Fold this left leg. Ardha Matsyendrasana आसन. इसको fold करेंगे. Right leg comes on top of the left leg. Yes, very good everyone. Gayatri ji थोड़ा सा right को और cross करो left को. Right leg को cross करो left को. हाँ, yes. Okay. Now right hand goes back. Left hand is up. Left को off किया और इधर से ankle को पकड़ लिया. Very good. हाँ, correct. Yes, Gayatri ji, you got it. Yes, Lisa दीदी. निशा जी आपका मुझे सर दिख रहा है, नीचे का नहीं दिख रहा है. I hope you are doing it. ठीक है? अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ankle को पकड़ के, very good. जितना हो रहा है it's okay. And then let's look back and hold for 30 counts. 1, 2, 3, करो देवश्री, 4, 5, नहीं देवश्री, लेफ्ट को पहले फोल्ड करो नीचे, राइट को क्रॉस करो लेफ्ट को, अर्ध मत्स्येंद्र बेटा, हाँ, और फिर लेफ्ट हैंड को उठाओ, लेफ्ट हैंड, आप राइट को उठा रहे हो, हाँ, बस आप पकड़ लो. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. 2, hold, continue everyone. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Slowly and slowly release. और जो लास्ट वेरिएशन या लास्ट पोस्चर रहेगा आज के लिए, अगेन ऑल दीज वी विल रिपीट ऑन द अदर साइड ऑल्सो. सो व्हाट यू डू इज राइट लेग को स्ट्रेट किया, लेफ्ट लेग को इधर लेकर आ गए थाइस के ऊपर. हाँ, जितना पीछे लेके जा सकते हो उतना पीछे लेके जाओ. ठीक है, और फिर कुछ नहीं करना है. लेफ्ट हैंड को उठाया, इनहेल किया और इधर पीछे से लाके इसको लॉक कर.
लेफ्ट हैंड को उठाया, लेफ्ट को उठाओ, हाँ, और पीछे से लेकर आए और लाके इसको इधर से पकड़। यस, सही, इट्स ओके। कम ऑन निशा जी, कम ऑन निशा जी, निशा निशा निशा, कम ऑन। चलो, वेरी गुड देवश्री। ठीक है एवरीवन, लेट्स होल्ड एंड slowly you can keep going down also. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, so we will release. Now the 3 asanas that we did in the sitting posture we will do again for the लेफ्ट लेग। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया था कि राइट को ऐसे फोल्ड किया था, तो अभी हम क्या करेंगे, आवर राइट लेग इज स्ट्रेट, लेफ्ट को वी विल फोल्ड। चलो गायत्री जी, टुडे नो सूर्य नमस्कार, ओनली दीज ब्लॉक्स ट्विस्ट। ओके, चलो, तो लेफ्ट को फोल्ड किया, जितना पास आ सकता है उतना पास लेकर आएंगे, एंड देन टेक सपोर्ट ऑफ राइट हैंड, इधर ले लो सपोर्ट, पहले राइट हैंड का सपोर्ट नीचे ले लो, हाँ, लेफ्ट को उठाया और अब लेफ्ट को इधर से घुमा लो, वेरी गुड बबीता, और फिर इसको राइट से पीछे ले जाके पकड़ लो, वेरी गुड गायत्री, कम ऑन, लेट्स होल्ड, 1 2, चलो देवश्री, हाँ, नहीं देवश्री, लेफ्ट को फोल्ड करो बेटा, पहले राइट लेग खोलो स्ट्रेट, राइट लेग स्ट्रेट खोलो, लेफ्ट को फोल्ड करो, हाँ, लेफ्ट हैंड को उठाओ, नहीं, लेफ्ट को उधर से लेके आओ, अंदर से बाहर, हाँ, यस, और अब राइट को, यस यस, 4 5 6 7 8 9 and 10, and then slowly 5 counts, let's go forward bend, आगे झुकेंगे, 1 2 3 4 and 5, let's come up slowly and slowly, release the lock। ठीक है, अभी यहीं पे we are sitting like this only, the only difference is इसको राइट को फोल्ड कर लो, हेलो समायरा, राइट को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ओके, एंड लेफ्ट विल क्रॉस द लाइन। चलो पहले एवरीवन, राइट को ऐसे फोल्ड किया एंड लेफ्ट को क्रॉस कर लिया, वेरी गुड गायत्री जी। चलो बबीता, राइट को क्रॉस करके लेफ्ट को इसको क्रॉस कर लिया, यस, वेरी गुड राधा, यस, वेरी गुड लीजा दीदी। ठीक है, और अभी क्या किया, लेफ्ट हैंड पीछे गया, राइट हैंड ट्विस्ट करके, नहीं गायत्री, अंदर से बाहर, हाँ, यस यस यस, राइट हैंड एंड देन लेट्स होल्ड द एंकल। इसमें व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे टॉवल को नीचे लगा लो और ऐसे करके, ठीक है, चलो एवरीवन, वी विल होल्ड फॉर 30 काउंट। दिस इज अर्ध मत्स्येंद्र आसना, very powerful asana and very good asana. All those who are diabetic should do it every day for 1 month to 2 minutes. Okay, सब पेंक्रियाज, इंसुलिन, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चल, twist करो। Are you feeling the twist in the belly? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 Nisha-ji 4 3 2 twist करो 1 last 10 counts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Let's release the lock and then the last twist
or the lock for today is, now we will put the right leg on the left thigh. ठीक है, राइट लेग को लेफ्ट थाई पे, चलो गायत्री जी, ओके, राइट लेग को लेफ्ट थाई पे जितना पीछे से पीछे जाएंगे, एंड देन लिफ्ट योर राइट हैंड अप, राइट हैंड को अप किया और इधर से लेकर गए पीछे से, हाँ पीछे से ले जाके और इसको लेफ्ट थंब को होल्ड कर, ओके, तो इसको पीछे लेकर गए, चलो देवश्री, राइट को लेफ्ट, हाँ यस, राइट को उठाओ, राइट हैंड को और पीछे से लेकर आओ, राइट हैंड को, हाँ, और पीछे से लेकर आओ, पीछे से लाके और इसको लेफ्ट थंब को पकड़ लिया एंड देन होल्ड एंड देन लेट्स गो डाउन, 1, वेरी गुड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and clapping, and then slowly release the lock, release the hands, palms, everything. Let us sit straight once again. So because we are doing locks, let us try today full Padma Asana or lotus pose. Okay, we have never tried this. Okay, so let me show it to you once. What we will do is, your right leg comes on top, sorry, your left leg comes on top of the right thigh. चलो everyone, let us start. निशा जी आराम से करना, लेफ्ट लेग को उठाओ, राइट के ऊपर रखो, ठीक है लीजा दीदी, एवरीवन डन। अभी ये राइट को बाहर निकाल लिया, राइट को लीव इट आउट एंड लिफ्ट इट विथ योर हैंड, लिफ्ट इट विथ योर हैंड एंड ब्रिंग इट ऑन टॉप ऑफ द लेफ्ट हैंड, यस दैट विल लिफ्ट इट, यस वेरी गुड, वेरी गुड, बबीता करो, नहीं हो रहा है, ठीक है, अर्ध करो, धीरे धीरे होगा, हाथ करो, अर्ध कर लो, हाँ ठीक है, चलो एवरीवन, ओके, एंड देन योर थंब एंड योर इंडेक्स फिंगर होल्ड टच एट द टॉप ऑफ ईच अदर एंड लेट्स सिट, वेरी गुड, बैक स्ट्रेट, वेरी गुड everyone is looking so beautiful, very good. Close your eyes, inhale and exhale. Okay? Inhale and exhale. Let us chant Om 5 times. Okay? I will tell you when to do it. Inhale and exhale. First 3 normal counts. Inhale and exhale once again. Third count. Inhale and exhale, and with this deep inhale, and let us start chanting Om 5 times. Gently rub your palms, rub them fast.
fast, fast, and fast. Keep rubbing them faster. Once you generate enough heat between your palms, place it on your face. Gently massage your face. Bring your hands or palms in front of your eyes. With a smile on your face, let us open our eyes. Thank you everyone for joining. Thank you so much everyone for joining half an hour early today.